Good morning, students. In the last video, we have completed nucleophilic addition reactions with removal of water of aldehyde and ketones, which includes reactions of primary amines, secondary amines, or you can say reactions of amines, hydroxylamine and hydrazine and its derivative, which includes reaction of aldehyde and ketones with amines, hydroxylamine and hydrazine and its derivative. Its derivative includes phenylhydrazine, 2,4-dinitrophenylhydrazine and semicarbazine, 2,4-dinitrophenylhydrazine or 2,4-DNP. All includes removal of water. One question which arises in these reaction is, these reaction requires careful control of pH. These reactions all required careful control of pH. The question is, nucleophilic addition reactions require careful control of pH. Why? Acidic medium is required but not excess of acid. The reason is, since sufficient acid must be present to give the reasonable equilibrium concentration of, लिख लीजिए साथ के साथ, since sufficient acid must be present. कुछ एसिड, एक अमाउंट में एसिड है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड मस्ट बी प्रेजेंट टू गिव equilibrium concentration of protonated aldehyde or ketone. प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स, क्योंकि रिएक्शन जो आपकी स्टार्ट होगी वो प्रोटोनेशन से ही स्टार्ट होती है. इफ दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस and after that electron will shift here and carbon will acquires positive charge at which nucleophile attack. तो रिएक्शन आपकी प्रोटोनेशन से स्टार्ट है, तो एसिड, some amount of acid is required. However, to acidic reaction, if to acidic reaction medium या to acidic medium convert amines, अमीन है आपके या हाइड्रेजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैं, अमीन टू इट्स प्रोटोनेटेड फॉर्म. एल्डिहाइड और कीटोन ही नहीं बल्कि अमीन्स भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आपके हाईली एसिडिक मीडियम हुआ तो. फॉर्म which is no nucleophilic, which is no longer nucleophilic. इसमें अमीन्स जो आपका है, अमीन्स है, इट विल आल्सो गेट प्रोटोनेटेड. अगर आपका एसिडिक मीडियम हुआ, एक्सेस ऑफ एसिडिक, तो अमीन्स आल्सो गेट प्रोटोनेटेड. नाउ दिस अमोनियम आयन, अल्काइल अमोनियम आयन इज नॉट न्यूक्लियोफाइल. अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है. अब न्यूक्लियोफाइल नहीं है, सो इट कैन नॉट अटैक, दिस न्यूक्लियोफाइल नाउ कैन नॉट अटैक
on कार्बोकैटायन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के प्रोटोनेशन से जो कार्बोकैटायन बनता है वो अब न्यूक्लियोफाइल, उस पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। अगर ये अमीन है, अमीन्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन द कार्बोकैटायन। लेकिन एक्सेस ऑफ एच-आयन हो, एक्सेस ऑफ एसिडिक मीडियम हो, देन दीज अमीन्स गेट प्रोटोनेटेड, अमीन्स जो है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज वाई too much acidic medium is not required, but acidic medium is required. Acidic medium required for protonation of aldehyde, but amines could not be protonated. So amines should not be protonated. So the reaction requires acidic medium, but excess of acidic medium is not required. तो ये क्वेश्चन आपका इन सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में जो हमने की है, रिएक्शन विद अमीन्स की है, लास्ट वीडियो में हमने की थी रिएक्शन विद अमीन्स, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, रिएक्शन विद हाइड्रेजीन, फिनाइल हाइड्रेजीन, 2 नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन एंड सेमी कार्बेजीन्स। उन सभी में केयरफुल कंट्रोल ऑफ एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारी रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, वी विल do the next reactions, oxidation and reductions of aldehyde and ketone. So first of all we will take oxidation. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid but ketones are not. ये हमने अल्कोहल में भी आपको बताया था कि अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते तो एल्डिहाइड बनाते हैं और एल्डिहाइड बड़ी आसानी से आगे कीटोन्स में कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो aldehydes are easily oxidized, aldehydes are easily oxidized to carboxylic acids but ketones are not, hence aldehyde can be oxidized by weak oxidizing agent, like Tollens reagent, Fehling solution, and बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो एल्डिहाइड बड़ी आसानी से फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट्स के द्वारा रिड्यूस किए जा सकते हैं। कीटोन्स इन रिएजेंट्स से रिड्यूस नहीं होते। कीटोन्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय दीज रिएजेंट्स। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के डिफ्रेंशिएशन में आप इन टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसमें टोलेंस रिएजेंट। Now what is Tollens reagent? Chemically it is called ammonical silver nitrate. And the formula is AgNH3 twice OH negative. Basically it is prepared by silver nitrate and ammonium hydroxide, and that is called ammonical silver nitrate. It is prepared by AgNO3 silver nitrate and ammonium hydroxide. First is produced silver hydroxide and ammonium nitrate. This silver hydroxide again makes complex with ammonium hydroxide to produce AgNH3 twice
diamine silver 1 complex OH negative plus 2 water. So this compound, this is our Tollens reagent. This is our Tollens reagent. Now this Tollens reagent oxidize aldehydes to carboxylate ions. Any aldehyde, not ketone. Tollens reagent is used for aldehydes only. This is our Tollens reagent, ammonical silver nitrate plus 3OH9, and when warm the solution it will produce carboxylate ion. We will give here salt. Why salt? Because we are using basic medium. तो बेसिक मीडियम में जो हमारा एसिड प्रोड्यूस होगा इट विल प्रोड्यूस साल्ट. तो कार्बोक्सिलेट आयन प्लस 2 सिल्वर प्लस 4 अमोनिया and 2 water. Now these 2 silver, now in this reaction Tollens reagent contains Ag positive. रिएक्शन से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ अलग से. चलिए कोई बात नहीं. यहाँ पर हमारा जो सिल्वर है ना वो Ag पॉजिटिव है एंड आफ्टर द रिएक्शन इट कन्वर्ट इनटू सिल्वर. तो ऑक्सीडेशन नंबर here is before the reaction it is +1, after the reaction is 0, so it is reduction. Tollens reagent itself get reduced and oxidize the aldehydes to carboxylic acid. And this silver produced, it deposit on the wall of test tube. Deposit on the wall of test tube and act as silver mirror. Your test tube will act as silver mirror, and hence this is also called silver mirror test. Silver mirror test. Silver mirror test for aldehydes. aldehyde के लिए आपका टेस्ट होता है. silver, the silver produced, this silver produced will get deposit on the wall of test tube. अगर ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ये देखिए जरा, अगर ये आपकी टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब के अंदर की तरफ जो सिल्वर प्रोड्यूस होगी वो डिपॉजिट हो जाती है. और आपको मालूम है जब ग्लास के एक साइड में हम सिल्वर की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं देन इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट एंड विल एक्ट एज मिरर. तो मिरर की तरह वर्क करती है. तो यहाँ पर यही सिल्वर हमारा मिरर की तरह काम करेगा एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट. दिस इज आवर एल्डिहाइड. This is Tollens reagent and silver mirror is produced. So Tollens reagent oxidize aldehydes to carboxylate ion and silver ion get reduced to metallic silver. So this is first test, silver mirror test or Tollens reagent test. Second is Fehling solution. Now what is Fehling solution? Fehling solution consists of two parts. Fehling A consists of an aqueous solution of copper sulfate. Now copper sulfate, you know, it is blue in color. And other part is Fehling B. Fehling B contains alkaline solution of Rochelle salt. ROCHELLE. Rochelle salt. Now what is Rochelle salt? It is sodium potassium tartarate, CH2COO, sodium ion and potassium ion. Sodium potassium salt of tartarate. टार्टरिक एसिड होता है आपका CH2COH. ब्यूटेन
1,4-dioic acid. This is your tartaric acid, and this is sodium and potassium salt of tartaric acid, which is called रोशिली साल्ट. इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं. ये लीजिए, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ tartarate. This is called रोशिली salt, and these two, phelling A and phelling B, both are mixed at the time of test of aldehyde, and the aldehyde is warmed with this phelling solutions A and B mixture and produce a red precipitate. Now, what is the reaction and what is the role of this rochelle salt? First of all, since the phelling B is the alkaline solution, phelling B is our alkaline solution. So, in alkaline medium, the copper sulfate, copper ion of the phelling A, in presence of alkali, may produce copper hydroxide, and which will precipitate. It may occur, but we want to stop this reaction, क्योंकि कॉपर आयन अगर आपके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, then the reaction will not take place. It will not be able to oxidize aldehyde. So we want to prevent this precipitation of copper ion, and the role of rochelle salt is to prevent it prevents precipitation of copper ion as hydroxide. वो कॉपर आयन के हाइड्रोक्साइड की तरह प्रेसिपिटेट होने से उसे बचाता है by making complex. Then it makes a complex with copper ion like CH, Cu, OCu, COO, COO. Sorry, it is with this copper. So it makes a complex with copper ion. This is our copper plus 2 ion, and prevent its precipitation as a hydroxide. This complex is unstable, and hence phelling A and B are kept separately and mixed only at the time of test. Okay, now what is the test? Reaction of aldehyde or ketone with phelling A and phelling B. This is your aldehyde reacts with copper oxide, which are produced during phelling A and phelling B, or you can also write it as copper ion plus hydroxide ions separately. चलिए अलग से दिखाते हैं रिएक्शन को. Copper ion plus hydroxide ion, then it produce again carboxylate ion. Basic medium है, so we will write salt, plus Cu2O. Cupric oxide is produced, which is red in color, and it gives red precipitate. Cupric oxide. And now 3 water.
This is the test for aldehyde. Aldehyde when warmed with phalline A and phalline B produce, warm with water, phalline A and phalline B produce red precipitate of copper oxide. This is our test for test of aldehyde and ketones with phalline solution. Aldehyde gives red precipitate with phalline solution, whereas ketones gives no red precipitate with phalline solution. Third is Benedict solution. See, Benedict solution. Benedict solution, again reaction is same, because Benedict solution is again a mixture of, what is Benedict solution? A mixture of copper sulfate and a solution of sodium carbonate and sodium citrate, citric acid या सोडियम सिट्रेट, इन दोनों का मिक्सचर है. यहाँ पर आपका जो सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉपर आयन के साथ वो स्टेबल होता है, एंड दैट इज वाई बेनेडिक्ट ए एंड बेनेडिक्ट बी आर नॉट गिवन, दे आर मिक्स्ड एंड सेंड टू द मार्केट. Citric acid makes a stable complex with copper ion and the reaction is again same, क्योंकि यहाँ पर फिर आपका copper ion ही है. It will again react in the same way. Aldehydes reacts with copper ion in hydroxide ions. The alkaline medium produce RCO negative plus C2O plus water 3H2O, and this Cu2O it produce, okay, write it again, the main product is Cu2O, it produces red precipitate. So reactions of aldehyde and ketones with phalline solution and Benedict solution is same. This is for with phalline solution, this is for with Benedict solution. The reaction is same, gives red precipitate. So these are oxidation reactions of aldehydes. Oxidation reactions of aldehyde. One more test which differentiate between aldehyde and ketones is Skiff's reagent. Skiff's reagent. This is also used to differentiate aldehyde and ketones. Now, what is Skiff's reagent? Skiff's reagent is a pink colored rosa aniline hydrochloride, rosa aniline hydrochloride. Rosa aniline hydrochloride, which is pink colored. When SO2 is passed through it, it becomes colorless. Now when this colorless Skiff's reagent, is called Skiff's reagent, and when this colorless Skiff's reagent is passed through aldehyde, when aldehyde is added to Skiff's reagent and aldehyde, Skiff's reagent with aldehyde again restore पिंक कलर, फिर से पिंक कलर हो जाता है. Whereas it does not give pink color with ketones. So this is also used for the differentiation between aldehyde and ketones. Now oxidation of ketone. Oxidation of ketones. Oxidation of ketones, as we have already done. Ketones on oxidation
gives carboxylic acid with less number of carbon atom, CH3, CH2, CO, CH3. And this is your keton when oxidized. Now these are oxidized by strong oxidizing agent, weak oxidizing agent like Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solution, इनको ऑक्सीडाइज नहीं करते. These are oxidized by strong oxidizing agent like nitric acid, concentrated nitric acid. Now it will oxidize the keton and we will get CH3 COH plus CH3 COH. Molecule get dissociated from this site. यहाँ से molecule dissociate हो जाएगा and it will produce ethanoic acid and carboxylic acid with 2 carbon atoms, and also again ethanoic acid, one carboxylic acid with 2 carbon, means ethanoic acid. Now it may happen that bond dissociation occurs from this site. अगर जो मैंने ग्रीन लाइन दिखाई यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट होता है, देन द प्रोडक्ट शुड बी फॉर्मिक एसिड विच विल गेट ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड वाटर एंड प्रोपेनोइक एसिड. तब आपके प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते थे अगर बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट होता है. तो इसके लिए हमारा एक रूल आता है, पॉपऑफ्स रूल. व्हेन मिथाइल कीटोन्स, पॉपऑफ्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर मिथाइल कीटोन्स. सो व्हाट इज पॉपऑफ्स रूल? Popov's rule. Popov's rule. In case of unsymmetrical alkene, in case of unsymmetrical ketone, in case of unsymmetrical ketone, not alkene. In case of unsymmetrical ketones, the cleavage occurs in such a way that carbonyl group means CO. Carbonyl group remains with smaller alkyl group. जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा. दिस इज आवर कार्बोनिल ग्रुप. हेयर इज मिथाइल एंड हेयर इज इथाइल. सो carbonyl group remains with methyl group and bond will dissociate from this side. So this is our Popov's rule कि in case of unsymmetrical alkene, in case of our unsymmetrical ketone, in case of unsymmetrical ketone, CH3 CH2 CH2 CO CH3, there is propyl and methyl group on both sides of the carbonyl group. So carbonyl group will remain with methyl group and bond will dissociate from here. This is applicable only for methyl ketones. ये भी ध्यान रखना है. Popov's rule is applicable for methyl ketone. It is applicable for methyl ketones only. मतलब जहाँ कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप हो, जस्ट लाइक दिस वन. ये there is a methyl group with a carbonyl group. If we don't have any methyl group, then we will get a mixture of all the possible products. Suppose कीजिए if we have CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3,
Now if the oxidation of this compound occurs, now we will get a product, bond dissociation from this side, and we will get a 2 carbon carboxylic acid means ethanoic acid, and a 4 carbon carboxylic acid means butanoic acid. Bond may also dissociate from this side and we will get propanoic and 3 carbon propanoic acid, CH3 CH2 COH plus CH3 CH2 COH. So we will get propanoic and propanoic, or we may get ethanoic and butanoic. All the possible products will produce. So this is oxidation of ketone. Now we have completed oxidation of aldehyde and ketones. In the next video we will take reduction reactions. Thank you.